Hello my dear student, welcome back to my YouTube channel Sona Classes. आज हमें OTET सेकंड पेपर सोशल साइंस 2026 पेपर 2 डिस्कशन करबा पले बी सेटटा सेट बी का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा देखा पले इंग्लिश मो लास्ट क्लास रे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिस्कशन कर देछि तापरे लास्ट क्लास मो MIL ओडिया डिस्कशन कर देछि क्वेश्चन आंसर आज होछि इंग्लिश टा देखिबा देखा पिले इंग्लिश नंबर 61 देखा पिले टीचिंग ग्रामर शुड एम एट डेवलपिंग द नॉलेज ऑफ डेक्स rules and definitions of a language, forms and structures of a language, communicative function of a language, both forms and rules of a language. ओटा पिले 61 रो तमरो सठिक उत्तर हला पिले सी communicative function of a language. तापर नेक्स्ट देखा पले 62 नंबर टा यूजिंग स्ट्रेस पॉज एंड इंटोनेशन करेक्टली इज द सब स्किल्स ऑफ डेक्स लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग नंबर 62 रो सठिक आंसर हला पले स्पीकिंग नंबर 2 रो सठिक आंसर हला पले स्पीकिंग अब देखा पिले नंबर 2 रो नंबर सठिक आंसर टा हला स्पीकिंग स्पीकिंग यूजिंग यूजिंग using stress pause and intonation correctly is the sub skills of dex speaking. तापर देखा पले क्वेश्चन नंबर 63 माने क्वेश्चन नंबर 63 देखा पले द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएम्स आर माने द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग पोएम्स आर डेक्स एंजॉयमेंट एंड comprehension comprehension and appreciation enjoyment and appreciation enjoyment comprehension and appreciation नंबर 63 रो सठिक आंसर हला पले डी enjoyment comprehension and appreciation डी हला राइट आंसर तापर देखा पले नेक्स्ट 64 रो guessing the meaning of new words in a printed text is a sub skill of dex listening speaking reading writing माने 64 रो सठिक आंसर हला पले सी रीडिंग देखा पले गेसिंग द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स इन ए प्रिंटेड टेक्स्ट इज ए सब स्किल ऑफ डेक्स रीडिंग नेक्स्ट देखा पले 65 नंबर देखा पले आफ्टर डिस्कशन ऑफ ए पैराग्राफ ऑफ ए टेक्स्ट स्टोरी थ्रो साइलेंट reading and comprehension questions the teacher uses a question what would happen then this question is global question referential question factual question predictive question को क्वेश्चन टाइटा नंबर 65 रा राइट आंसर हला पले डी प्रिडिक्टिव क्वेश्चन तापरे 66 नंबर देखा पिले 66 नंबर क्वेश्चन टा
इंग्लिश द टीचर प्रोवाइड्स some outlines about a topic and asks learner to write an essay on that topic. This kind of writing is called DAX. Controlled writing, guided writing, free writing, parallel writing. 66 रो तमर आंसर होची पिले करेक्ट आंसर बी गाइडेड राइटिंग. अपन नेक्स्ट कपिले 67 नंबर क्वेश्चन टा नोट टेकिंग इन्वॉल्व्स डैक्स लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. 67 नंबर क्वेश्चन रो करेक्ट आंसर हला पिले सी listening and writing. Listening and writing. Note taking involves listening and writing. Number C होची तारा correct answer. तापर देखा पिले which does not come under the importance of learning English. माने which does not come under the importance of learning English. It's a medium of communication of information and news. English is found on the covers of most products. It does not bridge the gap between speakers of different mother tongues. Career prospects depend on the proficiency in English. देखा बिले 68 रो करेक्ट आंसर हला सी. 68 रो करेक्ट आंसर हला बिले सी. It does not bridge the gap between speakers of different mother tongues. सी होची 68 रो राइट आंसर. तापर नेक्स्ट कपिले which of the following statements is not correct. Which of the following statement is not correct. Rote learning is very necessary to learn a language. Exposure to language is the prime source of language. Children learn a language in collaboration with each other. Learning of grammar does not enable a child to speak fluently. 69 रो करेक्ट आंसर कोड पे देखो ए. 69 रो तमरो करेक्ट आंसर हला पिले ए. रोट लर्निंग इज वेरी माने रोट लर्निंग इज वेरी नेसेसरी. Rote learning is very necessary to learn a language. 69 रो करेक्ट आंसर लाबिले ए. Which of the following statements is not correct? Rote learning is very necessary to learn a language. तापर नेक्स्ट कपिले नंबर 70 नंबर क्वेश्चन टा देखो which letter is silent in the word column in pronunciation. Which letter को अक्षरटा is silent in the word column in pronunciation. नंबर 70 रो करेक्ट आंसर हला पिले डी. नंबर 70 रो करेक्ट आंसर कोटा पिले डी. डी हला तारा करेक्ट आंसर. एन लेटर टा व्हिच लेटर एन लेटर टा होची तमरा एन लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम इन प्रोनाउंसिएशन. एन लेटर टा तापर देखा पिले एठी माने पैसेज देछि 71 टू 75 माने भितर क्वेश्चन अछि आ पैसेज भी माने आंसर टा काढी के हमको लिखे माने टिक मारे को हबो. Read the passage carefully
and answer the following questions. Question number 71 to 75, choosing the correct alternatives given. देखा बिले, the road to success is not straight. There is a curve called failure, a loop called confusion, speed bumps called friends, caution lights called family, and you will have flats called jobs. But if you have a spark called determination, an engine called perseverance, insurance called faith, and a driver called God, you will eventually make it to a place called success. In spite of all our planning and preparation, unexpected challenges are certain to arise. The bumps in the road will be unavoidable, but you will never get to your destination if you are not willing to drive over them. The difference between a disaster and triumph lies in whether or not you are prepared and willing to weather the storm. If you are ready, those bumps will become the stepping stones. Which of the following does not help a person achieve success in life? Which of the following does not help a person achieve success in life? Determination, faith, perseverance, confusion, कोटा. क्वेश्चन नंबर 71 रा राइट आंसर है पे डी, कंफ्यूजन. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, कंफ्यूजन. कंफ्यूजन माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प ए पर्सन अचीव सक्सेस इन लाइफ? Confusion does not help a person achieve success in life. The road to success is dash. The road to success is dash. Straight, shortcut, slanting, twisted. कोटा पिले पढ़ी थिला. क्वेश्चन नंबर 72 रा करेक्ट आंसर है पिले डी, twisted. The road to success is twisted. Which of the following has been described as the insurance necessary for the journey? Loop, faith, determination, planning. Question number 73 रा तमरा करेक्ट आंसर है पिले बी, faith. कोटा faith, B. मैंने which of the following has been described as the insurance necessary for the journey? Faith. तापर देखा पिले क्वेश्चन नंबर 74, what is the engine that keeps the journey moving? Determination, perseverance, success, faith and planning. 74 क्वेश्चन रा सठिक उत्तर कोटा पिले बी, perseverance, बी तारा राइट आंसर. तापर देखा पिले the difference between a disaster and triumph lies in dash. Whether you are ready and willing to endure the storm, whether you are afraid of bearing with it, whether you dislike to weather the storm, whether you dislike but work hard to face it. 73 sorry
75 क्वेश्चन तमर सठिक उत्तरटी कोटा पिले 75 ए 75 तमर राइट आंसर होची ए वेदर यू आर रेडी एंड विलिंग टू एंजॉय द स्टॉर्म। तापर देख पिले नेक्स्ट हला तमर 75 तापर नेक्स्ट देख 76 टू 80 भीतर भी गोटे तमर पोएम देछि सेतु क्वेश्चन आंसर करबा को हबो। रीड द पोएम केयरफुली and answer the following questions. Question number 76 to 80. Choosing the correct options given. Getting up from the bed, I look at the rising sun through a crack in the window. I watch as a new day is going to born. I see a new body in me, a new soul washed pure. Whatever lies ahead for me to do, with my heart I will finish it for sure. I won't be back to bed now. The sun has gone up the hill. I must get ready to take up my job and to set rolling my fortune's wheel. देखो पिले 76 नंबर क्वेश्चन टा देखो व्हाट इज द पोएम अबाउट ई विषय रे माने देखो द ब्यूटी ऑफ नेचर इन द मॉर्निंग द हार्ड वर्क ऑफ द स्पीकर द विलिंगनेस ऑफ द स्पीकर to perform his duty the blessing of God to do anything. Question number 76 रा राइट आंसर कोटा पिले सी राइट आंसर टा कोन सी द विलिंगनेस ऑफ द स्पीकर टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। तापर देखा पिले the speaker in the poem is dashed towards his duty, lazy and hesitant, reluctant and angry, determined and interested, worried and fearful. The speaker in the poem is dashed towards his duty. Question number 77 रा राइट आंसर कोटा पिले सी कौन राइट आंसर सी determined and interested सी। तापरे नेक्स्ट का पिला माने 78 क्वेश्चन नंबर 78 हला द पोएट ऑब्जर्व्स द राइजिंग सन थ्रू ए होल इन द डोर ए क्रैक इन द डोर ए होल इन द वॉल ए क्रैक इन द विंडो। The poet observes the rising sun through a hole in the door, a crack in the door, a hole in the wall, a crack in the window. 78 रा correct answer कोटा पिले D 78 रा right answer होची D a crack in the window। तापर देखा पिले what does the phrase my fortunes will in the last line of the poem symbolize? The speakers love in life, the wheel of the speaker's chair, the movement of the sun, the change of time in a day। Question number 79 रो राइट आंसर हला पिले ए राइट आंसर कोटा तमरा ए द स्पीकर्स लव इन लाइफ ए हला तमरा द स्पीकर्स लव इन लाइफ। तापर नेक्स्ट का पिले
Question number 80. What does the speaker do at the beginning of the day? Watches the sunrise, gets up from the bed, enjoys the setting sun, shares his feelings with nature. What does the speaker do at the beginning of the day? Question 80 ର correct answer ହେଲା ପିଲେ B. Question 80 ର right answer ହେଲା ପିଲେ B. Gets up from the bed. ଏଇଟା ହେଉଛି correct answer B. ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ question number 81 ଦେଖ ପିଲେ I dash be 30 next year. Should, can, am going to, may. Question number 81 ର right answer ଟା କୋଉଟା ପିଲେ C. am going to. I am going to be 30 next year. I am going to be 30 next year. तापर देखा पिले 82 नंबर क्वेश्चन टा तमर I enjoy dash on the river bank to play, playing, play, be playing. 82 ର करेक्ट आंसर ହେଲା पिले B. playing. कोटा B. playing. I enjoy playing on the river bank. तापर देखा पिले 83 नंबर क्वेश्चन टा will you dash love me when I am old and grey? Still, already, yet, since. Question number 83 रा right answer कोटा पिले A. Still. Question number 83 रा right answer होचे A. Still. माने will you still love me when I am old and grey? तापर देखा पिले 84 नंबर देखा पिले a fast car goes fast. The word fast used 2 times in the sentence functions both as dash, adjective and adjective, adjective and adverb, adverb and adverb, adverb and intensifier. क्वेश्चन नंबर 84 रो राइट आंसर होची पिले तमरा B. क्वेश्चन नंबर 84 रो राइट आंसर ला पिले B. एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. क्वेश्चन नंबर 85 देखा पिले व्हाट्स द रीजन dash your options do you think? What's the reason dash your options do you think? With, on, in, for. Question number 85 right answer ला पिले D. For. What's the reason for your options do you think? तापरे क्वेश्चन नंबर 86 देखा पिले क्वेश्चन नंबर 86 है if you heat butter it dash would melt, could melt, melts, might melt. 86 नंबर राइट आंसर है पिले C. melts. C. melts. If you heat butter, it melts. Question number 87 देखा पिले Question number 87 देखा पिले Father said to his son, where are you going? The indirect speech of the above sentence is dash. Father said to his son that where he is going. Father asked his son that where he was going. Father said to his son where he was going.
father asked his son where he was going. Question number 87 ର राइट आंसर होची पिले डी. क्वेश्चन नंबर 87 ର राइट आंसर हला पिले तमर डी. फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग. तापर देखो पिले नेक्स्ट. One should keep one's promises. The passive of the above sentence is dash. One's promises should be kept. Promises should be kept. Promises should be kept by one. Promises should have been kept. Question number 88 रा तमरा करेक्ट आंसर टा कौन पिले. क्वेश्चन नंबर 88. क्वेश्चन नंबर 88 तो राइट आंसर ला पिले बी. प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट. तापर देखा पिले क्वेश्चन नंबर 89 हला. Which of the following is a grammatically correct sentence? He is rich, yet he is not content. 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 Question number तमरा 89. क्वेश्चन नंबर 89 र राइट आंसर ला पिले कौन ए. ही इज रिच येट ही इज नॉट कंटेंट. तापर देखा पिले क्वेश्चन नंबर 90 देखा पिले. देयर आर पूल्स ऑफ वाटर इन द फील्ड. इट डैक्स फॉर 3 hours. इज रेनिंग. रेन. had been raining. has been raining. क्वेश्चन 90 रा राइट आंसर कोटा पिले डी. क्वेश्चन 90 रा तमरा राइट आंसर होची पिले डी. डी. देयर आर पूल्स ऑफ वाटर इन द फील्ड. इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours. क्वेश्चन 90 रा करेक्ट आंसर होची डी.